Hello friends, my name is Ankur and welcome back to my channel. Friends, today we are going to start our English speaking part 89 and we are going to discuss about Santvana means consolation type sentences in our English language. So friends, let's start our English speaking part 89. English speaking part 89, Santvana means consolation. Friends, consolation basically means that if something happens to a person or something tragedy happens to a person in a family, so we normally give him consolation or santvana. We pray for him, that is he live well, that his father may rest in peace, whatever was his destiny, it happened. So we normally wish good luck for his future and we console him. So this is known as consolation means सांत्वना. बड़े अफसोस की बात है. So in English it means it's a pity, it's very sad. The sentence basically means that बड़े अफसोस की बात है, means कोई चीज फ्रेंड्स समथिंग हैपेंस दैट वी फील वेरी रिग्रेटेड, मतलब बहुत दुख होता है कि बड़े अफसोस की बात है भाई इसके साथ गलत हुआ. सो इन इंग्लिश इट मीन्स इट्स अ पिटी, इट्स वेरी सैड. सो इट इज ए कंसोलेशन टाइप सेंटेंस. उससे सांत्वना दो. सो इन इंग्लिश इट मीन्स कंसोल हिम. इन दिस सेंटेंस द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट उसको सांत्वना दो, मीन्स समथिंग हैज हैपेंड टू हिज इन हिज लाइफ, समथिंग ट्रेजेडी हैज हैपेंड to his life, so he is basically sad or something. So basically what we do, we say उसे सांत्वना दो, means console him. So it is also a consolation type sentence. संसार का कुछ ऐसा ही नियम है. So in English it means that's the way the things are. The sentence basically means that it is a truth, that संसार का कुछ ऐसा ही नियम है. Whatever is written in destiny, it will happen. So in English it means that's the way the things are. संसार का कुछ ऐसा ही नियम है, मीन्स दैट्स द वे द थिंग्स आर. इट्स अ फेमस थिंग एंड इट हैपेंस टू नॉर्मली एवरी पर्सन. वॉट एवर इज रिटन इन डेस्टिनी इट विल हैपन. सो फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो ए कॉन्सोलेशन टाइप सेंटेंस. ईश्वर की यही इच्छा थी. सो इन इंग्लिश इट मीन्स इट वॉज गॉड्स विल. द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट ईश्वर की यही इच्छा थी, मीन्स वॉट समथिंग हैपेंस टू ए पर्सन इन हिज लाइफ, वी नॉर्मली से भाई ईश्वर की यही इच्छा थी. सो इन इंग्लिश इट मीन्स इट वॉज गॉड्स विल. ईश्वर की यही इच्छा थी. सो इन इंग्लिश इट मीन्स इट वॉज गॉड्स विल. सो फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो ए कॉन्सोलेशन टाइप सेंटेंस. ईश्वर पर भरोसा रखो, संकट टल जाएगा. सो इन इंग्लिश इट मीन्स हैव फेथ इन गॉड, मिस फॉर्च्यून विल पास. द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट वी शुड बिलीव इन गॉड, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, गुड एंड बैड टाइम्स occur in every person's life. There is a phase. There is a phase of one first time, then after that phase changes and another time comes, either good or bad. So ईश्वर पर भरोसा रखो, संकट टल जाएगा. सो इन इंग्लिश इट मीन्स हैव फेथ इन गॉड, मिसफॉर्च्यून विल पास. इट इज ऑल्सो ए कॉन्सोलेशन टाइप सेंटेंस बिकॉज वी आर गिविंग कॉन्फिडेंस एंड वी आर गिविंग टू अनदर पर्सन दैट ही मे बिलीव इन गॉड एंड एवरी बैड टाइम विल पास अवे सून. हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं. सो इन इंग्लिश इट मीन्स वी ऑफर आवर कॉन्डोलेंसेज. इफ समथिंग हैपेंस रॉन्ग फ्रेंड्स, तो वी नॉर्मली हम अपनी संवेदना, अपना खेद प्रकट करते हैं, मीन्स हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं. सो इन इंग्लिश इट मीन्स वी ऑफर आवर कॉन्डोलेंसेस. इफ समथिंग, इफ ए पर्सन डाइज समथिंग इन हिज फैमिली, वी नॉर्मली गो एंड वी से हम उसकी संवेदना प्रकट करते हैं, मीन्स वी ऑफर आवर कॉन्डोलेंसेस. सो फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो ए सांत्वना मीन्स कॉन्सोलेशन टाइप सेंटेंस. हम उसके पिता के देहांत पर दुखी हैं. सो इन इंग्लिश इट मीन्स वी आर डीपली ग्रीव्ड एट द डेथ ऑफ अवर फादर. द सेंटेंस बेसिकली मीन्स दैट द पर्सन इज वेरी मच सैड एंड डिप्रेस्ड ऑन उसके पिताजी के देहांत पर, मीन्स हम उसके पिताजी के देहांत पर दुखी हैं. सो इन इंग्लिश इट मीन्स वी आर डीपली ग्रीव्ड एट द डेथ ऑफ अवर फादर. फ्रेंड्स, इफ समवन लूजेज हिज फादर और मदर by if he loses in his family, so we normally feel grieved at their death. So we normally say हम उसके पिता के देहांत पर दुखी हैं. So in English it means we are deeply grieved at the death of our father. So we are very much deeply grieved, we are deeply hurt. So we offer our condolences to that family. ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहन करने की शक्ति दे. So in English it means may God give you strength to bear this terrible blow. The sentence basically means if something tragedy has happened in someone's family and he has lost his very dear ones in his family, so we normally say ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहन करने की शक्ति दे. मीन्स द टाइम विच इज करंटली बीइंग गोइंग ऑन, इट इज अ बैड टाइम, सो वी प्रे फ्रॉम गॉड दैट ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहन करने की शक्ति दे. सो इन इंग्लिश इट मीन्स may God give you strength to bear this terrible blow. So we normally offer our condolences and we try to give strength and try to boost the moral of
the affected person in his family. So this is a consolation type sentence. जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है. So in English it means what cannot be cured must be endured. The sentence basically means that जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है. मीन्स जो भी हमारे साथ होता है फ्रेंड्स, कोई कष्ट हमारे साथ आता है, अगर उसका कुछ इलाज नहीं हो सकता तो हमें उसे सहना ही पड़ेगा. सो इन इंग्लिश इट मीन्स व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड. सो फ्रेंड्स basically it means what cannot be cured must be endured. So it is also a consolation type sentence, and it is a truth, friends, that we need to face in our life. As I said that there is a patch of both times, good times and bad times. If good times come, then definitely bad time also come. If bad time is there, then good time will also come. So we should be ready to face challenges in our life, and we should have faith in God, because misfortune doesn't appear by time. It randomly appears. So we always pray from God that this misfortune will pass and we should live a happy and positive life. So friends, this was the English speaking part 89, in which I tried to explain you about Santvana, means consolation type sentences, in which we normally give our condolences and we try to boost the moral of the affected person who has lost his dear ones in his society, in his family. So Santvana, consolation, means giving him support, boosting his moral, and giving him his strength, and praying from God that he may achieve success in life, that this misfortune will pass from his life. So friends, as usual, I wrote down the sentences in Hindi and side by side I translated you in English so that it will be easier for you to understand. So friends, I hope you would have find it easier to understand about Santvana, means consolation type sentences in our English language. And friends, these kind of sentences are basically tragic type sentences that we normally pray that it doesn't occur in everyone's life, but sometimes they do occur in our life. So we use these kind of sentences on that tragic condition only. So friends, kindly practice these kind of sentences in your spare time. Either try to talk in front of mirror or try to talk with your friends, relatives, neighbors, parents, etc. And ultimately, at some point of time or after passage of time, you will find that your English language has become fluent, your confidence has boosted up, and your personality has groomed. So friends, kindly like, share, subscribe my channel. Please do press the bell icon in the subscription box, and I will also share my Instagram and Facebook link in the description box below. So friends, please keep supporting me so that I may bring you more interesting English speaking topics which could prove to be an asset for you and which could help you in brushing up your fluent English communication in front of another person. So friends, please keep practicing these kind of sentences, and ultimately you will become a perfect English speaker. So friends, thanks for your valuable and precious time. Have a nice day.